I would want to welcome everybody to yet another session. We are happy to announce that with all your support, हम लोग एक और contaminants पे focus लेके आए इस बार water quality matters series में, and then this time the focus is on INREM. And with all your support, we hope that this event we are going to continue it, and also a lot of you also gain a lot of knowledge in this session. आप अलग-अलग महीने में आप अगर यहाँ पे जुड़ते हैं तो आपको अलग कंटामिनेशन है उनके ऊपर कैसे आपको समझ बनानी है, तो वो भी वी होप कि आप इस इवेंट के आप उसको सीख सकते हैं। तो मैं सभी को दोबारा इस इवेंट में वेलकम करता हूं। एंड देन वाटर क्वालिटी मैटर्स का जो इनिशिएटिव है वो उसके बारे में थोड़ा और हम लोग जानेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट सुंदर सर, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं अबाउट द वाटर क्वालिटी मैटर्स इनिशिएटिव। किरण, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस। थैंक यू किरण, एंड वेलकम सभी को वाटर क्वालिटी मैटर्स में। और ये वाटर क्वालिटी मैटर्स का 4th एडिशन है। ये हम लोग चौथे महीने कर रहे हैं। ये 2022 में 2020 जनवरी में हमने वाटर क्वालिटी मैटर्स शुरू किया, और ये इनरेम का यूनिसेफ के साथ मिलकर एक थिंकिंग हुआ कि वाइडर सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर नजर लाने की जरूरत है, और उसमें हम जब एक साथ बात करते हैं उन सभी इश्यूज के बारे में तो उसके ऊपर नजर नहीं आ पाता है। जैसे कि अगर अभी देखेंगे कि 2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद देश के बहुत सारे जगहों पे, बिहार पे, असम पे और भी जिन जगहों पर बाढ़ की स्थिति आती है, और बाढ़ की स्थिति आती है तो पीने के पानी का प्रॉब्लम होता ही है। और उसमें जो पीने के पानी का प्रॉब्लम्स होता है उसके बारे में जो तैयारी है वो अब से होनी चाहिए, और उसके बारे में बातचीत कभी नहीं होती है। इसी तरीके के पानी के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत नहीं होती है। तो हमने नाइट्रेट इश्यू से शुरू किया था जनवरी में, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है कि नाइट्रेट्स होता क्या है, उसकी वजह से शरीर के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, और इसके लिए सॉल्यूशंस भी क्या है कि अगर पानी में नाइट्रेट्स है वो होता क्यों है, इसके लिए सॉल्यूशंस भी क्या है। तो जानकारी बहुत कम है, और हमने नाइट्रेट से शुरू किया और हमें पता चला इस तरीके से 1 महीने में एक इश्यू के ऊपर अगर नजर दें तो यहाँ पर जो आपके सामने इतने सारे अलग अलग पानी के जो इश्यूज यहाँ पर जो दिख रहा है उसका नाम लेना भी मुश्किल है ना। बहुत सारे ऐसे चीजें यहाँ पर लेड, अमोनिया, यहाँ पर है एल्यूमिनियम, मर्कुरी, जिसके ऊपर शायद ही कभी कुछ बातचीत होती है ना। अगर हम डेटा ढूंढने के लिए जाएंगे तो मर्कुरी के ऊपर शायद ही हमको कोई मैप मिले, कोई डेटा मिले, और अगर मिले भी तो हम पता नहीं चलता है हमें कि करना क्या है। तो उस थिंकिंग से हमने वाटर क्वालिटी मैटर शुरू किया कि 1 महीना लेते हैं, साल में 1 महीना, जिसमें एक इश्यू के डेप्थ में जाते हैं। उसमें आप अगर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते हैं इनरम फाउंडेशन का, कि वाटर क्वालिटी नेटवर्क का, तो आपको इस इश्यू के बारे में और थोड़ी जानकारी मिलती है। और महीने में हम एक इवेंट करते हैं, और इस इवेंट को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर आपको एक टेक्निकल कंटेंट और थोड़ा जो फील्ड में जो इश्यूज है उसके बारे में भी जानकारी मिले। इस तरीके से जैसे मेरे कलीग किरण ने आज बताया, तो हमने शुरू किया था नाइट्रेट इश्यू से, और उसके बाद हम लोग कई और इश्यूज पे गए हैं, जैसे कि पैथोजेंस पे गए थे, कीटाणु के ऊपर गए हम फरवरी में, बाद में हम आर्सेनिक पे गए पिछले महीने, और अभी हम आए हैं आयन इश्यू पे, आयन मैटर्स ना। जरूर आयन मैटर्स, और आयन ऐसा इश्यू है, काफी बार हम लोग कहते हैं कि पानी के जो इश्यूज है वो इनविजिबल है, यानी कि वो दिखते नहीं है, हम उसको सूंघ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। मगर आयन ऐसा इश्यू है, वो दिखता है, यानी कि पता चलता है हमें कि आयन एक इश्यू है, और हम सभी इसको देख पाते हैं, कभी पीले रंग से तो कभी लाल रंग से, है कि नहीं। कहीं ना कहीं तो हम लोग ने देखा ही है कि जो आयन है, जो वाटर सोर्स है, हैंडपंप है, जहां से आयन निकलता है ना, उसके आगे जो धब्बे लगे रहते हैं, जो दाग लगे रहते हैं नो, लाल दाग, ब्राउन कलर के दाग लगे रहते हैं। तो आयन ऐसा इश्यू है जो बहुत इतना ज्यादा दिखता है, तो शायद हम उसके साथ यूज टू भी हो गए हैं कि हमने उसको अपना भी लिया है, कि कई जगहों पर हम उसको एक इश्यू मान भी नहीं रहे हैं ना, जबकि आयन बीआईएस स्टैंडर्ड्स में है। और आज हम लोग जानेंगे कि क्यों वो आयन एक इश्यू है, कि क्यों आयन मैटर्स, कि व्हाई डज आयन मैटर,
और अगर इस इश्यू के ऊपर हमको करना भी क्या है ना, काम कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या है, ग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक्सपीरियंसेस क्या, अनुभव क्या है। और कई सारे एनजीओ हैं यहाँ पर भारत में, अलग अलग जगह से आए हैं। मेघपाइन अभियान है, वाटर एड है, साइगल फाउंडेशन है, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भारत में अलग अलग जगहों पर, उनसे भी आज हम लोग सुनेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आज यहाँ से आप कुछ लेकर जाएं, कि कुछ सिंपल चीजें, सरल चीजें आप लेकर जाएं। तो आपको पता होगा सेफ वाटर लर्निंग कार्ड जैसा एक सिस्टम है, जहाँ पर सिंपल सरल चीजें को हम लोग रखते हैं। आज हम लोग जाएंगे, जानेंगे कि गांव में लोग गवा के पत्ते से लेकर कैसे आयन की टेस्टिंग करते हैं। आप में से कई लोग उसको कर भी रहे होंगे। तो इस तरीके के एक मिक्स ऑफ चीजें है ना, हम करते हैं एक आयन मैटर्स, एक वाटर क्वालिटी मैटर्स के जो इवेंट में, जहां पर आखिर में एक पब्लिक इंटरेस्ट क्विज भी रखते हैं ना। तो ये आज का कार्यक्रम है और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू, वाटर क्वालिटी इश्यू के बारे में फोकस कराना चाहते हैं कोई महीने इस साल में, हमारे पास और 7 महीने हैं इस साल में। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर फोकस रखना चाहते हैं वाटर क्वालिटी मैटर्स में, तो यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमारी टीम के साथ आप सपोर्ट भी कर सकते हैं उस इश्यू के ऊपर। वो फ्लोराइड हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, वो स्ट्रॉन्शियम हो सकता है, कोई भी इमर्जिंग कंटेमिनेंट हो सकता है, जिसके ऊपर हम लोग नजर करेंगे। और चैट बॉक्स को आप यूज कीजिए, उसमें आप सजेशंस दे सकते हैं हमको, और हम उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीबडी जो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। और हम सबसे, हम यहाँ पर जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी से हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा ऐसा इश्यू है आयन, जो हमें लगता है कि जिसमें हमको सभी को सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि काम इतना ही हुआ है जिसमें सीख हम सभी को नहीं है। तो इसके ऊपर हम सभी लोग एक साथ मिलकर कैसे सीख सकते हैं, और इसके ऊपर समस्याओं का समाधान एक साथ मिलकर कैसे पता लगा सकते हैं ना? Passing it over to you, Kiran, to Yeah, take yeah, ahead IM matters. yes, Thank you yeah, so much. yeah. Thank you, Sundar sir, for setting that context. जो काम आएगा सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ पे। और इस सेशन का, इस डिस्कशन का मैं आप लोगों को एक तरीके का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, क्या क्या हम लोग आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉल में, आज वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सुनेंगे नानक संदसानी की तरफ से वो क्या इस इशू के बारे में सोचते हैं, पहले हम वहां पे जाएंगे। और इसके बाद आज बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे ऑन आयरन मैटर्स, व्हाई वी शुड फोकस ऑन आयरन। We have excellent members today who are going to share their experiences on this issue of iron, and then there are a lot to learn. So after we hear from Nanak ji from UNICEF, we are going to go to Mr. Engineer A.B. Paul, who's a ex Chief Engineer of PhD Assam. We are going to hear his experiences on working on the iron issue while he was the PhD engineer back in his days. हम लोग उनसे सुनेंगे, आयरन के मुद्दे के बारे में और डीप में जाएंगे। और उसके बाद जैसे सर ने कहा कि वी वांट एवरीवन, ऑल ऑफ यू, टू एक्चुअली टेक बैक something from this event. तो हम लोग safe water learning cards, and we are going to launch the focus on iron contamination today, that my colleague is going to handle. And जो भी इस बीच में अगर question and answers रहेंगे, so we have slot for question and answers as well, ताकि आप लोग any questions आपके मन में आते हैं, please put down in the chat. We are a big group right now, हम लोग एक बड़ा ग्रुप है अभी, तो चैट बॉक्स का इफेक्टिवली यूज कीजिए ताकि सभी जो भी स्पीकर्स आएंगे यहाँ पे आप क्लियरली उनको सुन पाए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, अगर आप कोई भी सवाल है, पुट डाउन इन द चैट बॉक्स। कोई भी भाषा में अगर आपको सवाल लिखना है आप लिखिए, वी विल हैव टीम मेंबर्स टू सपोर्ट यू टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन। तो वो होगा, जो ये पहला भाग होगा जहाँ पे इंजीनियर ए बी पॉल हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दूसरे भाग में हम लोग जाएंगे फील्ड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट लोकेशन से, जहाँ पे वी हैव मेंबर्स स्पीकर्स फ्रॉम मेक पाइन अभियान, ये सेगल फाउंडेशन से और वाटर फॉर पीपल से हमारे साथ स्पीकर जुड़ेंगे, जो अपना लोकेशन से जो भी एक्सपीरियंसेस है ऑन वर्किंग ऑन द इश्यू ऑफ आयरन कंटामिनेशन वो हमको शेयर करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड हम लोग के पास एक
एक्साइटिंग क्विज है, तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द क्विज। क्विज एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहाँ पे हम लोग आप उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो भी फुल स्कोर करेगा उस क्विज में, हम उनका नाम हाईलाइट करेंगे एज iron matters ka water quality champion for this particular month. So and then remember, everything that you want to score, if you want to score really good marks in the quiz, तो सभी क्लूज आज के जो डिस्कशंस में सभी क्लूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिए। सो विद दिस लिटिल बैकग्राउंड on कैसे हम लोग क्या क्या आज करने वाले हैं एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट नानक समदसानी फ्रॉम यूनिसेफ, and then invite his thoughts on what he feels about iron specifically as a contaminant in drinking water. Thank you very much, Kiran. आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, yes. Okay, thank you very much. Dr. Sundar and all the colleagues, really wonderful to join here with this quality matters, and I really hats off to Sundar and all the partners to focus on ये खास चीजें जो वाटर क्वालिटी जो है उसके ऊपर फोकस करना। क्योंकि अगर मैं यूनिसेफ से तरफ से बात करूं तो अभी क्या होता है कि आप जब देखेंगे एमडीजी था तो मिलियन डेवलपमेंट गोल, तो कवरेज पर काफी था, इम्प्रूव वाटर सोर्सेज तक था, मगर एसडीजी जो आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें एक्सेस टू सेफ वाटर माने क्वालिटी पर आ गए बातें। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बात करें तो जेजीएम पहले के जो प्रोग्राम्स थे कवरेज पर ज्यादा फोकस थे, क्वालिटी भी था, मगर अभी तो आप देखो कि जेजेएम में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो बता रहे हैं उसमें भी ये बता रहे हैं कि भाई आईएस 10,500 माने वाटर क्वालिटी बिल्कुल एश्योर्ड रहे, एक्सेस टू सेफ वाटर बिल्कुल मुहैया कराया जाए। तो ये दोनों ही पहलू में देखें कि ग्लोबल लेवल और नेशनल लेवल भी बिल्कुल साथ में ही है उनके साथ में, और इसका वाटर क्वालिटी का काफी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। जो जैसे जैसे सुंदर ने बताया बिल्कुल सही कि पहले अगर आप देखो तो बड़ा बड़ा क्या होता था कि आर्सेनिक और फ्लोराइड ये दो बड़ा बड़ा चीजें होता था कि कंटामिनेशन है, और बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन तो भूल ही जाते थे बेसिकली, और वो जरा इग्नोर भी हो जाता था, तो वो एक अलग पहलू है। और तीसरा जो केमिकल कंटामिनेंट्स जो थोड़े थोड़े हैं वो जो भूले भी जाते हैं, जैसे आयन है, नाइट्रेट है, और भी चीजें नई नई आ रही है चैलेंजिंग, प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक भी आ रहा है। तो इसके ऊपर जैसे सुंदर से बात हो रही थी तो हमें बहुत अच्छा लगा, और माने उनको उनका जो ओपन माइंडसेट था कि भाई हम और भी काम कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। और इन द इंटरेस्ट ऑफ वाटर क्वालिटी इन इंडिया अगर अक्रॉस द स्टेट्स देखें तो ये सुंदर एंड टीम ने जो वाटर क्वालिटी पर सारा फोकस किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनली जस्ट फोकसिंग ऑन आर्सेनिक या फिर फ्लोराइड जगह पे, ये बहुत अच्छी बात है। और ये सारी चीजें अपने को सब लोगों को जाननी भी चाहिए और मेहनत करना चाहिए, ताकि एट द एंड जो मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है, जो गरीब लोग हैं, वो एक्सेस टू सेफ वाटर कैसे मुहैया कराया जाए। अभी आते हैं कि आज के जो पैनल बहुत अच्छे लोग चुने, जैसे मैं अभी एकलव्य प्रसाद जी को देख रहा हूँ कि मेघ पाया अभियान, तो इन्होंने जो बिहार में बिल्कुल लोकल ट्रेडिशनल मेथड से आयरन कैसे इसको टेस्टिंग किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, लो कॉस्ट मेथोडोलॉजी कैसे हो सकती है, उसके बारे में काफी अभ्यास किया है और उनके पास काफी अनुभव है। तो उनका अनुभव का निचोड़ हमें जरूर सुनना चाहिए और उनसे अपन देख सकते हैं। सहगल फाउंडेशन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, और उनका भी वाटर क्वालिटी में बहुत अच्छा रोल है, तो वो भी मैं देख रहा हूँ। तो आज ललित जी हैं, वो भी बहुत अच्छा बात करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद जो आते हैं कि एबी पौलदा तो देखा जाए तो माने क्या बोले, भीष्म पितामह है वाटर क्वालिटी के। तो उन्होंने तो आर्सेनिक में आसाम वगैरह में काफी काम किया, उनका इतने एज के बाद भी पेस मेकर लगा है, फिर भी आके आज बैठते हैं और इनका इतना जनून है। तो वो भी बहुत अच्छी बातें हैं कि ऐसे लोग भी अपने पास पीछे माने खड़े हैं, तो उनका भी अपन देखेंगे। और वाटर फॉर पीपल में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, उनका भी फील्ड एक्सपीरियंसेस हमें मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और लास्ट में किरण ने भी और सुंदर ने साथ में मिलके जो टीम ने ये लर्निंग जो कार्ड्स की जो बनाई है टेक्निक्स, हैट्स ऑफ टू यू, माने बहुत अच्छी बात है। तो इस बहाने क्या है, क्विज और इनको चैंपियन भी बनाते हो, उनका नाम भी डिक्लेयर करते हो, तो मुझे लग रहा है कि ये सारा इनिशिएटिव जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसको माने
मैं चाहता हूँ इसको जैसे जैसे चैट में जैसे किरण ने बताया जो जो इश्यूज आप चाहते हो डिस्कस करने के लिए वो भी आप डालिए ताकि इसको अपन आगे बढ़ा सकें। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा कि इसको अपन जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे सुने और इसके ऊपर ज्यादा डिबेट करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Nanak ji, for that introduction and your thoughts on the issue of iron. Thank you आपको आपने इस particular water quality matters का जो discussion है every month आपको आप उसको guide भी कर रहे हैं और आपका support भी मिला। Thank you for supporting. अभी yes we'll directly get into some interesting experiences अभी जो share करने वाले हैं हमारे speakers। तो अभी मैं invite करना चाहता हूँ engineer AB Paul। पॉलदा अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बिफोर पॉलदा स्टार्ट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू मैं पॉलदा के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने जाता हूँ। पॉलदा एबी पॉल इज रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ऑफ पीएचडी असम और उनके एक्सपीरियंस में व्हेन ही वाज एन इंजीनियर ही हैज वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन द इशू ऑफ आयरन आर्सेनिक और आज वो आयरन के बारे में उनका जो एक्सपीरियंसेस है from ground he is going to share here and very specifically about Polda that he is tried to bring the public health focus जो हम लोग बार-बार बात करते हैं that engineers need to have the public health focus when it comes to water supply programs. So he is going to he has done pioneering work in some of these introducing 5,000 बोला था वो तो मैं 4500 बोला। He has done some pioneering work in this particular issue of iron and today we would like to hear more about this particular work from AB Paul. So Paulda, if you're here we can over to you and we can start. Thank you very much those who are present today and the impressive list of the people. So it's a rare opportunity people like us get this chance of explaining what had been done and what was being done and what need to be done from the public health engineering point of view and experience. So I am coming with Jorhat. This is one of the most beautiful districts in Assam and it has got a lot of legacies. And Jorhat is called, it is the center of the culture of Assam. So I had been there as superintendent engineer in 90s first part. So that time I found a lot of problems. The people are not able to take the water from the public tap, nor they can remove this iron through this aqua garden, etc. So then I will tell you only today some 2 or 3 places where we worked and we got a lot of solutions also. So Jorhat is, as I told you, is Jorhat is only one district out of 34. It is north district of the Brahmaputra River, forms the largest riverless island in the world. It is not far away from Jorhat. This is called Majuli with a population of about 1.5 lakhs. It is the largest sweetwater island in the world. So there are a lot of population, 1 lakh plus, and 135 tea gardens are inside 2 or 3 and outside. It is circling Jorhat city, Jorhat town actually. Next. So I have shown water quality in addition. What is happening during the post-monsoon and the pre-monsoon, water depth varies. And with that, this iron content also varies from place to places. Chemical analysis has been done by the Central Groundwater Board. Groundwater of the district, potable aspect high iron content in the scattered spaces. Iron present still, we got 40 mg per liter, which is huge iron. We got it there. So you see, I have shown here a comet, which is not utilized because it is this flat is going to be sold to somebody. It's a new one. You see, look into the comet. Some water was dripping every day, and it has given the mark, red marks along there, porcelain color, which is very difficult to remove. The next one, I'll show you there are a lot of bacteria which are thriving in iron water. One is carnotix iron bacteria,
and it gives us the oxygen depletion as well as filamentous bacteria. And lactobacillus anaerobic bacteria doesn't require any oxygen to live, and it doesn't like also any oxygen, but it gives the, it is a very good one, but it gives the offensive smell of the H2S. So, visible. So I have seen it, the brownish water stains the cloths and basin. Stagnant iron water, normally known as the blood worms, can also be found, which make the water non-usable. It is not toxic. I have shown you the slide, how the blood worms are moving inside the water. What does it come from? It comes from a type of fly which loves this iron content water, and a little bit stagnant water is enough to draw their attention, and they will come and lay the eggs. And after a few days, the eggs got turned into the larvae which is coming. So whatever the water quality you are maintaining, and when you are taking a glass of pure sparkling clean water, suddenly you found one red thread is moving around, you are desperate to get rid of this source as well as to change the source. This is a bloodworm, and it is not making the water non-usable. What did you do? We put that mosquito net around the treatment plant so that this fly cannot come and lay the eggs. It is a kind of solution, of course, but a little bit of costly. Sometimes in the community one, a lot of mosquito net is required. Anyway, and what are the health effects? Health effects generally doctor will tell gastroenteritis, and in Lancet paper, which is the world famous journal, they have said that excess iron consumption over a long period can lead you into the diabetes. So, which is definitely very much interesting, and as well as people will have to take care of that. But for the iron removal, I'm telling you, iron generally comes with a low pH, 5.5 or 6, 6.5 maximum, because it is coming out from the rocks, it is coming out from the soil where the water is flowing over. But at this low pH, you cannot convert ferrous into ferric. When iron is coming into the water, we call it the clear water iron. That means no color or anything can be seen. But when you taste the water, you'll find the metal taste, and which you'll intend to reject immediately. So for removal of the iron, very, very important is oxidation from Fe2 to Fe3. So once you come to Fe3, you will get insoluble iron particles are moving around the water. But earlier it was totally clean, that is ferrous. And so we require to convert this ferrous into the ferric iron, and so that we can ultimately coagulate the ferric iron and sediment it out in a properly made basin, and then take it into the filter for the modification. So I have shown here that pre-theater. It was designed by me when I was superintendent engineer there at Jorat. I told you that is the first part of 90s. So the ONGCL, they are having a large colonies. They were fighting with the iron removal. So when we tested this whole water, we could find out that they had on the background, we'll find that pressure filter, this white body cylindrical. They use 2 pressure filters, but the pressure filter is filter only. It is not the treatment plant. That what I mean to say, iron requires to be changed ferrous into the ferric properly. Only the pressure filter can tackle it. Otherwise, this water within the pressure filter, water is left, will oxidize and will brownish in color and will precipitate in their kitchen and in the glass of water and everything. So what did you do? We first treated this water in our lab, which it can be treated. Then we found the pressure filter will act correctly if it is pre-treated. What is that pre-treated in that yellow color, that tank? Pre-treated, it is the aeration, then there is coagulation, then flocculation,
then sedimentation, then the filtration. Then filter part, we gave it to the pressure filter present there already. So, but these are the chambers was never put there, not designed. So we designed that one inside story, as I told you. First, it is oxidized. Then the water is passing through the pebble bed floculator. Before that, some sort of chemicals is also put, which is known as the coagulant, which is generally lime and alum also, so that the flux are formed. Now, polyaluminum chloride is very fine. It doesn't change the pH, but the alum will always cut down the pH, which makes the iron removal difficult. So, now it is for the community, but so we found it in 5 ways: the aeration, sedimentation, filtration, treatment process, and oxidation required for iron removal. And aeration, contact oxidation, and then sedimentation, then the sand filter. Or you can go for the dual media filter consisting of the anthracite coal and sand, which will give the much larger quantity of water treated within a particular time. Aeration and contact filter is also very important. When iron is moving through the filter base or moving through the pebbles, it leaves behind ferric coating over that. But this ferric is not entirely nuisance. It acts as a catalytic agent for conversion of ferrous into ferric. Why I'm telling you again and again is this. Once it is converted into the ferric, it behaves like any other particles in the river water, say the clay particles. So it is all positively charged, and then it is to be, the charge had to be neutralized by putting the coagulants, as you say. And once charges are neutralized, this will be moving around still due to the Brownian movement and other factors. But then it requires to be passed through the flocculator. We are using this pebble bed flocculator, which is cheap. And after the flocks are formed, we put it there before the flocculator through the flash mixture, some sort of coagulant, as I said. It may be polyaluminum chloride or the alum plus lime. One thing is very, very important, the pH factor. If pH is below 5 or 5.6 or that, it is difficult to remove iron. Very recently, we had a visit to the IIT professors and etc. on invitation by the Meghalaya. So we went there and strangely found it contains a lot of iron. But this iron doesn't get precipitated anywhere. It's the clear water. But the test will say that something else is also there. We tested, then we put lime there in the water sample, and we raised it nearly 10. And such everything gets charge neutralized, and the odd particles started to getting into big to smaller flux. So that the pH, without the pH improvement, you cannot remove iron that way. So contact flocculator, manganese coated sand or the brim or the crushed pyroxide. So if it is there, good, but it is generally costly. So 3 pitchers level iron removal system that was done in Gwalpara. So that was done in Jorhat. This this table has to be modified. So water doesn't come out, so that water doesn't come out through the spout. Rather, it will be lifted further and into 3 pitchers. There are 3 pitchers on a triangular type of support. And the first one is for the aeration. It is sprayed into the first pitcher, and thereafter it goes into that coagulants. A little bit of alum may be used if necessary. So then third one, second one, there is a filter bed made of the pebbles at the bottom, and over that, a layer of sand. It acts as a biofilter after a few days. So here a pilot package IRP on the left-hand side, you can see yellow color, that was made and put on a truck, and we moved in different places with the help of the local
ONGCL. So on the right hand side, the first package water treatment plant was made, and from small at a low cost, but it got everything there. So there we started taking the quality of the water with respect to the iron versus head loss in the filter bed, as well as the pebble bed propulator. So this is the, let me show you the iron removal flow diagram. Raw water get oxidation, number one. Number two is the flash mixture for the flocculants. After it is getting oxidized by exposing to the air, or both exposing to the air as well as putting the chlorine there. By exposing to the air, you cannot sometimes remove iron to that extent. It requires the follow the Henry's law. Henry's law will tell you if it is more than 10 and etc., very high drop of the water particles into the filter required, so that it gets a lot of time to react with the oxygen present in the air, so which can be predicted what is the time by that law. So now number three is the propulator. What is propulator? It is a pebble bed propulator. Why pebble bed propulator? Pebbles once get coated with iron will act as a catalytic agent. And why this propulsion? As I told you, this oxidized iron will form the small particulate materials into the water, which renders this red color. And that's why the propulsion is necessary to get it flock together, and the sedimentation necessary so the filter doesn't get prematurely overwhelmed by the iron coming into the filter and make it non-performant. So that is why the sedimentation is required. It is number 4 I've shown it. For those who want to make the sedimentation, generally 2 hours to 3 hours, which make the tank very big, we used tube settler. Then only 20 minutes, the whole sedimentation occurred. And once this is occurred, we pass this water in number 5, the filter. Filter is ordinary filter, but it has got the different kind of filtration medium. First one is anthracite, second one is sand. That it is all supported. Traditionally, this that is called the pebble base at the bottom. So why anthracite? It is because the backwashing time, so that sand doesn't get stratified, and anthracite will get stratified, but the anthracite pH, that is specific gravity, is very low in compared to the iron. This is 1.46. And that's why this anthracite bigger one goes up after the filter clearing also, and which helps to catch the bigger flux formed in the propulator. Smaller flux pass through that anthracite and goes into the sand filter just below the anthracite, and it picks up all the iron within the body, and the clear water comes out. Since there is a lot of handling, we require to be disinfected. So this is the pre-treater. Actually, I have shown it in that yellow color tank. We put in parallel to the pressure filter. Here I have given you what are the main components of that. So if anybody is interested, we can share our drawing also. So pre-treater is ultimately sedimenting out the ferric flux, and whatever the small flux is coming through the escaping the sedimentation will be caught by the filter bed, either in the form of the pressure filter or near general open filter. Regarding pressure filter, I got a very bad experience. That pressure filter inside story cannot be seen by the others, and when it breaks down, it is very difficult to bring it back in operational position within short time. And pressure filter, that is the reason, is not our choice. Iron removal challenges: chelated iron can be oxidized without breaking the compounds, for which pH is needed to be raised. Very recently, we faced, as I already said about Nagala a little bit,
Meghalaya is the neighboring state of Assam. We were called by the deputy commissioner and the body just to give them the suggestion. We found iron is totally chelated iron. There is no color at all even after half an hour detention. There is no color change, as if there is no iron. But once you put into the mouth, you will smell very strong metallic taste. So we just raised the pH nearly up to 10 by adding a lime. And within 15 minutes, everything came out from the water. It is not crystal clear. Now it is colored water. And all the frogs started moving here and there only by raising the pH to 9 to 10. This is very important. Operation maintenance issues are there. So that we have distributed, we have given them how to do that. Iron bacteria plugs the pipeline, often creates red water supply problem. That is in Purimganj water supply scheme where I was there executive engineer. I found every day when the people used to turn off the taps, every day, first 1 minute at least comes the red water. Thereafter only the clear water is to come. So then we have to look deep into the water. That is lot of iron bacteria. There's a lot of iron that has escaped the treatment, and in the pipeline, iron bacteria has grown. These are corroding the pipeline, these are plugging the pipeline. So we used to call it red water supply problem. Next. So you see, I'm showing here from a field experience the different photographs. You see the PVC, the first one, which is the PVC pipeline that is leading to the Jorhat Engineering College. And the second one is from Jorhat Medical. Now it has been turned into college, but that time it is Jorhat Civil Hospital. Now the third one, you find there is no space at all. Our people did not notice it. They say, pani na jaye, that is water doesn't go to what to do, sir. And Jorhat Engineering College people are also very vocal. So when we went there, we said to cut off the pipeline. When we cut the pipeline, imagine if hardly 10% space is available for flowing the water, and all are covered by the precipitated iron. But we tested it in a regional research lab. They say it is amorphous iron oxide. At the same time, it is having a lot of bacteria population has grown up, as you say. It might be it is the canal-6 or lacto-6. Lacto-6 will be in anaerobic condition in the pipeline, in an anaerobic condition. This then lacto-6 will be reproducing themselves, and big forms of the mass are formed inside the pipeline. These are filamentous bacteria. So there is another solution actually, if somebody wants to say that we cannot do all these things, but some sort of iron can be tolerated without any color. We used to do sodium hexametaphosphate. It is a deep flow plant utilized into the water. Then what happens? This iron will be there, but it will not be seen, because sodium hexametaphosphate will get the chelated iron inside. And chelated iron cannot be seen. In Meghalaya also, iron content was nearly 15 to 20, but we could not see any iron there until the pH was raised. So this is the condition of the pipeline. So ₹4 का pipeline बर्बाद हो गया था. So we changed the whole pipeline to Jorhat Engineering College, more than 5 kilometers away. So next. So it requires the people's participation. Community participation has to be done for the community water treatment system. Otherwise, PH staff or somebody else cannot maintain it properly without community support. So we used to organize the users committee meeting. They please come up and let's get together and discuss what is the problem for you. So they said the maintenance is the problem. Public health community public doesn't maintain it properly. And I know by my heart there is no fund from the operation and maintenance of the schemes. So anyway, the users committee came forward. They, okay, sir, if you give us the permission, we'll form a committee and we'll take over the plan, and you people will explain how to run the plan. It had been done. And then Bangalpur near Jorhat, what I was speaking,
speaking. This users committee was made. They took the responsibility. Not only that, with their own money, they created the big underground reservoir. They have created their own officials, beautiful officials within our land. And on the establishment day in Bengal Pukuri, people celebrate the day that this is the day users committee was formed and whole scheme was handed what was. That is why they were getting the water. So they are calling the children, they will recite, they will jump here and there, they will run around, but it is celebrating the establishment day of the Bengal Pukuri Users Committee. So here is the other initiative, multi-chamber iron. I designed it for Nalbari, where I used to stay earlier before we gave. It is Nalbari, it is the Lower Assam. INREM has got a very good work going on through European Commission help. That is arsenic problem study, as well as how to remove arsenic. Arsenic always comes accompanied with the iron. So anyway, here I have seen this is multi-chambered 300 to 500 LPH iron removal plant. It can be manufactured, it can be made by anybody in very nicely, and it works very nice. It has got everything, iron, water, there is the sprinkler at the top, then the pH reservoir. What is pH reservoir? Dolomite to keep. Every day you cannot drop this lime solution. That's the dolomite, the best candidate. Then it is passing through the sprinkler, number 4. Then the contact catalytes we have put there. Then the number 7 is the filter media. So that these things are all the flux are captured by the filter media. Then number 9, iron-free water within that is raising into a chamber number 2, where from you turn the tap and you get the clear water. Now that was UNICEF initiative. So when I was UNICEF consultant after retirement, they gave me one problem after a lot of things, that we'll have to develop such a filter household car which can remove iron, which can remove fluoride also. And which can remove arsenic also. When you are removing the iron, actually you are removing a lot of arsenic along with the iron precipitate. On the left-hand picture, you'll find this whole thing has been made by the people there. That is the ferrocement. We did not purchase from any company, any cement structure also. It is ferrocement, which has the later mosaic in the upper layer so that it becomes decent and it becomes quite slippery. Other thing doesn't hold on. And the next one I'm showing you, so that is this activated alumina. This is for the defluoridation, or if you wish, you can utilize the other kind of things also in the next one. But at the top on the right hand side, you are finding one round shape, brown color candle there. This is called Tripura filter. How we got the Tripura filter? Because we had the men, those who make in the villages, and we gave the training to the people in sanitation, all initiative taken by UNICEF, and I was the consultant only. The Tripura filter kaisa banana? It is a clay, a special type of clay, which is for pottery. You use it, mix up with the iron, that is rice sacks, mix up with some sand also. Then whole thing is burnt like brick, and under the first initial period, burned by the bricks. So you see the things have been made. There is a filter, Tripura filter has been kept on the left hand side is the candle, and on the right hand side these are ferrocement structures where it is in 2 bodies. At the top we are using this candle. We are putting the candle. When iron is removed, then this water is percolating to the next step where the absorbance for the fluoride or for the arsenic or for the bacteriological reason has been kept, and then the sprinkle and the water comes out very clean also. Next. So it generated this slide I'm showing on the left-hand side, these Tripura filters made by the NGO, and on the right-hand side, a series of filters they are making and selling in the market. It was quite profitable too. But unfortunately, with the death of the first initiator of that
um, of that NGO. So hardworking NGO still not, I could find out there. So we are still trying to get it, revamp the whole technology. Before it was shut down with the death of the owner, they made more than 5,000 numbers of the household filters. And all the filters are fitted at the top, tubular filter, because iron had to be removed. Otherwise, on the second layer, whatever the elements you have put, this will be all choked by iron. So once iron is removed, only the arsenic water or the filtered water, fluoride water, or other contaminants is coming into the filter, into the chamber, and where it is either absorbed or it is simply stained out. Next. So here I have seen it is the bigger community level. These are how we have put this iron removal system. This is ONGCL Colony. They are having a lot of officers staying there. They are well paid, but that's why they are very much sensitive about the quality of the water. So they put a lot of detail here and there, but none was giving the iron-free water. So when they came to us, as my superintendent, that was my job on behalf of the Assam government to help them. So we designed 1, 2, 3, 4 they have put together. We designed the package water treatment plant, which is hardly 14 feet by 6 feet, and height is 7.5 feet without this railing. So it is having the 4 chambers where all the 5 actions are taken. And now the chambers, before water passes through, it is passing through a channel. So in the forefront, you'll find 1, 2, 3, 4 numbers of the trays. These trays are containing that it is sprinkled the water into the trays, and these trays are containing different kinds of things. Generally, dolomite. The next one is coke, and thereafter it is going through the channel into 4 numbers of the treatment plants. Each capability is 25 meters cube per hour. It is taking amazingly small space. Now, next. So here, very recent development, just 3 or 4 months ago, we inaugurated this packaged water treatment plant with the help of the SITA, State Innovative Agency, and we designed it, and IIT took the overall responsibility quality checking. So it is put nearby IIT in Sangsar area. It is a village where the new AIMS is coming up with Guwahati. So this plant you'll find at the top on the left-hand side, there is an acrylic box. It contains a lot of electrodes. We are charging those electrodes, say aluminum electrodes. Then we are finding the aluminum ion from there. Now on the cathode side, you'll find this OH and hydrogen. Hydrogen goes up, but the OH is taken by the aluminum ions, and it is got the aluminum hydroxide. It is as good as like the alum. But here it is produced electrically. Why? With the supply of the chemicals in such a remote place, it's difficult to ensure, as well as this that is the ion transfer from one to another, or the lot of electrons are released. These are killing the bacteria too, and these are oxidizing the iron too. And iron is once oxidized, after that you'll find this the tank or the filter. There is flocculation, coagulation, and sedimentation. And now then IIT has been given many thanks by the JJM, and we are also propagating the local solution like Tripura filter, a little bit higher solution, 300 LPH to 500 LPH, multimedia filter, multi-chamber filter, and then bigger. Here the 5,000 population had been depending on this water. Now there is 7,000 population, and they are very much satisfied, and we are also satisfied it worked well. Thank you very much, sir. Thank you so much, Palda. Wealth of knowledge, wealth of information and experience sharing आपने आज किया है, and from all of us here, we are delighted to learn so much about iron removal techniques and the case study जो आपने जुगाड़ के बारे में share किया. Thank you so much. अभी हम लोग काम करेंगे because there are a lot of requests in the chat box to also explain the thing, summarize the thing in Hindi. So I will now invite my colleague Sumanjita Burman
She is the district coordinator at Nalbari district in Assam. She is going to very briefly give the summary in हिंदी में वो समराइज करेंगी और उसके बाद में हम सवाल और जवाब लेंगे। तो आपके पास अगर कोई भी सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट डाउन इन द चैट बॉक्स और हम इसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू सुमंजिता। Sumanjita, I think there is a lag in your connection. Anyone else? Navneet, Rashika, confirm कर सकते हैं? Yes, Kiran. It's clear. Okay. Sorry for that. For some time it was actually unstable, my network. Am I audible now? Yes, you're audible now. Yes. Okay, thank you. Good morning, everyone, and thank you, Paul sir, for अपने experience share करने के लिए। तो Paul sir, जैसे कि INREM जैसे कि KNG ने already बताया, वो executive engineer वो है PhD असम के, एंड आज उन्होंने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किया। वो जब जोरहाट में थे एज ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने आयरन के ऊपर कुछ टेक्नोलॉजीज वहाँ पे किया था इन द लेट 80s। तो वो उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताया यहाँ पे। उन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग वो WSS जो ये 80s का बात है, अर्ली 90s, तो तब PWSS था, तो ये आयरन रिमूव करने के लिए इतना वो जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स थे वो आयरन पूरा रिमूव नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आयरन को रिमूव करने के लिए पीएच का कंट्रोल ऑफ पीएच वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लो पीएच में, जैसे कि सर ने बताया कि लो पीएच में आयरन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है, और इसीलिए हमें पीएच का ध्यान रखना जरूरी है आयरन लेने के लिए। तो उन्होंने वो शेयर किया, और उन्होंने एक केस स्टडी शेयर किया था बंगाल पुखुरी से, बंगाल पुखुरी जोरहाट, जहाँ पे उन्होंने ये एक ट्रीटमेंट प्लांट का वहाँ पे वो किया था, एंड ये एस्टेब्लिश हुआ था 80s में। और ये प्लान जो है, आवाज नहीं आ रहा है मैडम। हाँ, उनका नेटवर्क का इशू है, दिक्कत है, तो हम वेट करते हैं तब तक वो वापस आएंगे। हम कुछ इंटरनेट का इशू होने की वजह से शायद ये हो रहा है। सुमंजिता वापस आ गई हैं, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सुमंजिता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमंजिता, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप बात कर लीजिए। आपका अगर वीडियो ऑफ कर सकते हैं तो भी चलेगा। सॉरी, मैं बात कर रही थी एंड व्हेन इट गॉट डिस्कनेक्टेड आई डिडंट रियलाइज। तो आप बात कर लें और एक शॉर्ट में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ताकि तो मैं बता रही थी कि वो जो उन्होंने वहाँ पे जोरहाट में बंगाल पुखुरी में एस्टेब्लिशमेंट किया था, वो उसका जो ऑपरेशन है उन्होंने जब इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो कम्युनिटी का जो रिस्पांस था वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को लेकर एक प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे। तो उस वजह से ये जो वाटर यूजर्स कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे बंगाल पुखुरी जोरहाट में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। जहाँ ये जैसे हम डिफरेंट नामों से डिफरेंट जगहों पे जानते हैं, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया था पॉल सर के थ्रू जोरहाट में। एंड वो जो बंगाल पुखुरी PWSS है वहाँ पे इट वाज द फर्स्ट, ये पहला वो PWSS था जहाँ पे ये वाटर यूजर्स कमेटी बनाया गया था फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्कीम।
तो उसके बाद और हमारे पास ये जो हाउस होल्ड स्लो सैंड फिल्टर है, उन्होंने अवेयरनेस उसको लेके भी किया फील्ड पे, क्योंकि ये जो आयरन रिमूवल टेक्निक्स है कम्युनिटी लेवल में, वो कॉस्टली भी होता है, कॉस्टली भी है और थोड़ा मुश्किल भी है मैनेज करने के लिए, बिकॉज ये पाइप्स को रस्ट कर देता है ज्यादा आयरन होने से। तो उसके बाद लोग तो ये स्लो सैंड फिल्टर यूज किया है लोगों ने, और पॉल सर जैसे कि बता रहे थे कि वो उन्होंने बहुत सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, ये जैसे 3 पिक्चर लेवल आयरन रिमूवल सिस्टम। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारा उनके पास एक्सपीरियंसेस है। ये जैसे आप उन्होंने ऑक्सीडेशन, ये 5 जो प्रोसेस है आयरन रिमूवल का, ऑक्सीडेशन, फ्लैश, फ्लोकुलेटर, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, तो ये सब उन्होंने वहां पे 80s में ही उन्होंने डेवलप किया है। तो इन शॉर्ट हिंदी में इतना ही समरी था। मतलब आयरन मेन चैलेंजेस जो है वो सर ने ऑलरेडी बताया। एंड थैंक यू पॉल सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमंजिता। आपने हिंदी में कोशिश की, जो पॉलदा ने हमारे साथ यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। एनी क्वेश्चंस अभी हम लोग ले सकते हैं, लेट अस टेक क्वेश्चंस। अगर आप अनम्यूट करना चाहते हैं तो विल टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस। आप अनम्यूट करके पॉल सर से अगर कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, अभी टाइम है, आप सवाल पूछ सकते हैं। If you are not, if you cannot talk, you can also write down the question in the chat box. आप क्वेश्चन को चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको सवाल पूछना है, अभी समय है। सर नमस्कार। नमस्कार, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए कि कहाँ से जुड़ जी रहे जी हैं। और हाँ, हाँ, बताइए। मैं सुरेश शुक्ला, महासमुंद छत्तीसगढ़ से, निदान संस्था है हमारी। जैसे पाल सर के द्वारा जानकारी दिया गया और मैडम ने उनका समराइज किया, उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई। हमारे महासमुंद जिले में भी पानी को लेकर के इस तरह मतलब महासमुंद के पूरे एरिया में ऐसा स्थिति है कि जल स्तर एकदम दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। और हम लोग बहुत अधिक टेक्निकल तो नहीं है इस बारे में, लेकिन जैसा टीडीएस चेक करते हैं बीच बीच में, तो यहाँ 250 से 300 प्लस आता है। तो इस जिले में इससे संबंधित क्या कुछ किया जा सकता है, थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, सुरेश जी, आप अपना सवाल को इंग्लिश में भी बता सकते हैं ताकि पॉल सर आप सुन पाए सवाल को। Repeat it again. Sorry, just. हाँ सुरेश जी, आप बताइए ताकि मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लेता हूँ। हाँ सर, ये अभी जैसे सर के द्वारा किया गया कार्य बहुत अच्छा है हमारे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में, क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर जल स्तर एक तो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, 300 से 400-500 फीट करीब चला गया। अब टीडीएस तक चेक कर पाए जो सामान्य एक टेस्टर से आता है, मीटर से जिसको चेक करते हैं, तो 250 से 300 प्लस टीडीएस है। आने वाले समय में संभावना भी है कि यहाँ पे पानी का जो स्तर है और अधिक नीचे चला जाएगा, और कुल मिला के यहाँ पे अशुद्ध जल का ही हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इस दिशा में हमारे जिले में क्या किया जा सकता है, कुछ मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है सुरेश जी। Paul sir, we are able to understand. So Suresh ji was trying to ask, in his location in Chhattisgarh, the water level is, ये सुरेश जी आपका जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आयरन से रिलेटेड है, आयरन के रिलेटेड भी आपने कुछ पॉइंट आउट किया था। आप एक काम कर सकते हैं, सुरेश जी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सवाल, ताकि हम उसको थोड़ा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और पॉल सर, एक सवाल है कि आयरन को रिमूव करने के लिए पीएच को कैसे बढ़ाएं? हाउ डू यू इंक्रीज पीएच ऑफ आयरन, पीएच ऑफ वाटर टू रिमूव आयरन? Thank you. Next question: how to increase the pH? Yes. Once you spray into the air this raw water containing iron, and there are a lot of carbon dioxide also. If you take up the water in a small glass or the beaker,
and keep it, and you'll find a lot of bubbles coming out from the water. It is nothing but carbon dioxide. So when you are releasing the carbon dioxide by spraying into the air, Henry's law will have to be followed. Well, it's, that is a theoretical approach. So then this carbon dioxide, as soon as goes out, the carbonic acid content also falls, and the pH automatically rises. We have seen it generally 0.5 to 0.6 pH rise you can expect without any chemicals. But still, if you require some rising of pH further, then you can pass it to dolomite. So because I'm not thinking about any pumps or machines or etc. I'm all along against these mechanical devices. Then I'll say go for the good quality dolomite in the first tray. It will spray over that dolomite, this water, then it will take up the pH raising elements from it. Dolomite is very nice one. So you need not to put the lime that way. Otherwise, if you put some lime solution, that is both acha. And take the pH to 9 around, both acha. You'll find it is getting oxidized easily. Yeah. Okay. So, Thank you, Paul sir. Now I would, since in the interest of time, I would like to move ahead. And Paul, if any questions are there, are questions may come up in the chat box. You can directly respond to those questions in the chat box. So right now, let's move. Thank you for responding, Paul. Now let's move to towards our next section. जो हमारा next section है, वो safe water learning cards का जो है उसके बारे में है, iron matters पे. So I would now request my colleague Sumanjita to come back again and introduce the safe water learning cards for iron for this month. Thank you. मेरा आवाज क्लियर है? Yes. Thank you. Okay, hi again everyone. So यहाँ पे जैसे किरण जी already mentioned, आज हम safe water learning cards for iron यहाँ पे release करने वाले हैं, because we are dedicating this month for iron matters. तो ये safe water learning cards में भी यहाँ पे जो लोग present है, most of the people are aware कि ये safe water learning cards क्या है. तो whoever is not aware of this, तो मैं एक बार briefly बता देती हूँ. ये safe water learning cards we have developed to take our knowledge, take the water quality management knowledge to the larger audience, to the community people. मतलब ये बहुत आसान तरीके से हम लोग कैसे community से कैसे जुड़ सकते हैं, बहुत आसानी से यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये फ्लैश कार्ड के जैसा हम लोग ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहले हमारा आयरन, जब हम आयरन के कार्ड्स को देखेंगे तो पहले हमारा आएगा आयरन स्टैंडर्ड्स. तो आयरन स्टैंडर्ड व्हेन यू फ्लिप द कार्ड, वहां पे आपको दिखेगा कि आपको पैरामीटर्स में क्या जानना होता है. मतलब BIS स्टैंडर्ड क्या है आयरन का. देन स्टैंडर्ड ऑफ सेफ लिमिट शुड बी सीन. आपको आयरन तो हमको देखने से पता ही चलता है कि इस पानी में आयरन है. तो ऐसा कार्ड है. देन आयरन टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट कार्ड इज ऑन दैट. तो आयरन टेस्टिंग में भी बहुत लोगों को यहाँ पे पता है कि हम लोग गुआवा लीव्स यूज करके गुआवा लीव्स को पानी के साथ गुआवा लीव्स को निचोड़ के थोड़ा सा पानी के साथ जब घोलेंगे तो उसके बाद थोड़ा टाइम रखने से ये ब्लैकिश कलर का हो जाएगा. ब्लैकिश मतलब ज्यादा आयरन होने से ब्लैक हो जाएगा, कम होने से थोड़ा ब्राउनिश आएगा, रेडिश. तो
तो ये हम कर सकते हैं फील्ड में गुआवा लीव्स के थ्रू। तो वो भी इस कार्ड में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो देयर आर सम क्वेश्चंस। तो जैसे हम लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट हो सकते हैं, मतलब लोगों को क्वेश्चंस होने से वो लोग ज्यादा सीखते हैं। तो देयर आर क्वेश्चंस एज वेल इन द सेट वाटर सेफ वाटर लर्निंग कार्ड्स। और आयरन के इम्पैक्ट्स क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट्स, तो हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड अदर इम्पैक्ट्स आल्सो आयरन हैज। तो वो सब क्या क्या जानने वाली बात है उसमें। व्हाट आर द थिंग्स to know about iron, how can iron get into your body, how can it affect your liver। अगर आयरन बहुत हाई कंटेंट में आप बहुत सालों से अगर खा रहे हैं तो it can lead to liver cirrhosis also। So वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, there are some information which the community and the people, wider audience needs to know about iron। तो and then iron household solutions के बारे में भी दिया हुआ है। तो Terafil filter, many of us here aware about Terafil filter, which is made by IMT Bhubaneswar। तो इसके बारे में और जानने से भी आपको गूगल में अगर टाइप करोगे तो आपको ये जैसे बनाते हैं, यूट्यूब में भी उन लोग का वीडियो है। फिर स्लो सैंड फिल्टर, यहाँ पे नलबारी में मैं जहाँ पे काम करती हूँ यहाँ पे बहुत कॉमन है स्लो सैंड फिल्टर, उसके बारे में दिया हुआ है। तो there are also solutions given in this safe water learning cards। और आयरन कम्युनिटी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन में आयरन मतलब वाटर आयरन ऑक्सीडेशन के थ्रू से भी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम कम्युनिटी सॉल्यूशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये हम लोगों ने ये डेवलप किया गया है। और आज हम लोग ये आयरन सेफ वाटर लर्निंग कार्ड्स फॉर आयरन, हम लोग का डिफरेंट पैरामीटर्स में है ये सेफ वाटर लर्निंग कार्ड्स। वी हैव आर्सेनिक, वी हैव फ्लोराइड, देन पैथोजेंस एंड अदर कंटामिनेंट्स एज वेल। तो ये सेफ वाटर लर्निंग कार्ड्स वी हैव फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इफ any one of you is interested to आपको अगर ये सेफ वाटर कार्ड्स चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप यू कैन यूज इट इन योर एरिया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो विल शेयर अ लिंक हियर। जैसे कि आपको एंटायर सेट आपको मिल जाएगा जो हमने डेवलप किया है सेफ, which is called safe water learning cards। And we have seen that this was very helpful। हम लोगों ने इससे बहुत सारे कम्युनिटी ट्रेनिंग्स किए हैं। तो आयरन एंड जैसे कि मैंने बताया, we have this safe water learning cards for different parameters। and chat box में already ये लिंक डाल दिया गया है जिससे आपको ये कार्ड आपको भी मिल सकता है। तो आप अगर उस फॉर्म में चैट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वो उसमें अगर आप अपना वो फॉर्म को फिलअप करेंगे और हमारे पास आ जाएगा, देन वी विल हम आपके साथ ये सेफ वाटर लर्निंग कार्ड्स विल शेयर विद यू एज वेल। So I hope it was hopeful, or thank you for listening to me, and over to you, Kiranji. Yeah, thank you so much, Sumanjita. And I already see there are requests coming up for the safe water learning cards। अभी मैंने दोबारा लिंक को शेयर कर दिया है। एक छोटा सा गूगल फॉर्म है, आप उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। You will get based on the preference of your language, we will share you the relevant safe water cards on your email ID। So आप उसको ले सकते हैं। और I also request Sumanjita, if you can also share the Iron Matters safe water cards on the Zoom chat right now, so that everybody will have access to that. Sure. Yeah. All right. So thank you so much, Sumanjita, for talking about the safe water cards for iron। And before we move to the next part, now we are going to talk more about field। तो field का section जाने से पहले
मैं आप लोगों को जो सुमंजिता ने पहले बताया था कि अमरूद के पत्ते से जो आके गोवा के जो लीव्स हैं उससे कैसे टेस्ट किया जा सकता है आयरन को, उसका एक मैं वीडियो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ. जस्ट क्विकली गोइंग हेड एंड शेयरिंग माय स्क्रीन. नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रवीण है और मैं इंडियन फाउंडेशन बक्सर बिहार से हूँ। और अभी मैं आप लोग को बीच से पानी में जो आयरन होती है उसकी जांच कैसे की जाती है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें क्या किया है कि एक हैंडपम्प का पानी लिए हैं और दूसरा जो लिए एक बोरवेल का पानी लिए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरी चीज़ की पानी में जो आयरन होता है उसकी जाँच कैसे की जाती है। तो इसमें जो सिंपल सा प्रक्रिया, इसमें हम 2 प्लास्टिक अलग अलग बोतल लिए हैं और ये कुछ 3-4 पत्तियाँ अमरूद के लिए हैं। और इसमें क्या करेंगे अब क्या कि इस अमरूद की पत्ती को निचोड़ करके इन दोनों में डालेंगे। एक जो हमारा हैंडपम्प का पानी का सोर्स का पानी है और दूसरा जो है इस बोरवेल का है। इसको हमने अच्छे से निचोड़ करके और इसके अंदर डाला, सेम इसके अंदर डाल करके छोड़ देंगे। और दूसरा सोर्स का भी मैं इस तरह से निचोड़ करके इसमें हमने डाला। कम से कम 4 पत्तियों को हमने इसको निचोड़ करके अच्छे से ये तरह से डाल दिया। अभी क्या करेंगे, इसको एक पत्ती के सहारे इसको अच्छे से मिला देंगे दोनों को। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारा हैंडपम्प का पानी था और दूसरा ये बोरवेल का था। तो इसमें जैसा पानी में अमरूद की पत्ती को निचोड़ के डाला तो इसका रंग धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से काला होते जा रहा है। और इस जिस तरह में आप देख सकते हैं बोरवेल का हमने पानी लिया था तो इसमें क्या है कि बिल्कुल साफ़ दिख रहा है अमरूद की पत्तियाँ भी, और आप एक तरह से देख सकते हैं कि पानी का भी जो रंग है बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। और दूसरा ये जो दिख रहा है इसी हैंडपम्प का पानी, इसमें हमने अमरूद की पत्तियों निचोड़ के डाला तो धीरे धीरे करके काला ही होते जा रहा है। और इससे स्पष्ट होता है कि ज़्यादा मात्रा में इसमें आयरन है और इस तरह के पानी पीने से लोगों को बहुत तरह की समस्याएं होती है। धन्यवाद। So this was the video, recorded video, which was made by our team member Praveen in the state of Bihar. तो उन्होंने यहाँ पे हमको शेयर किया है. So we just wanted to, before we move to the field section, यहाँ पे इस वीडियो को हम लोगों को लगा कि आपके साथ शेयर करें. Now I would like to invite our another set of speakers. यहाँ पे मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा डॉक्टर ललित शर्मा फ्रॉम सैगल फाउंडेशन. ललित जी, आप यहाँ पे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? Am I audible? Yes, Lalit ji. So we have this is going to be a panel discussion. ये पैनल डिस्कशन होने वाला है जिसमें हमारे साथ 3 स्पीकर जुड़े हैं. डॉक्टर ललित शर्मा फ्रॉम सैगल फाउंडेशन, और हमारे साथ कुमोद कुमार दास हैं जो मेक पाइन अभियान से जुड़े हैं. कुमोद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुमोद कुमार दास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं. और प्रकाश नायक जी, प्रकाश चंद्र नायक, आप प्रकाश चंद्र नायक जो है वो वाटर फॉर पीपल से हैं. सो प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ. हाँ, प्रकाश जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम आप सभी को स्पॉटलाइट पे रख सकते हैं. और मैं अच्छा, कुमोद जी शायद अभी नेटवर्क इशू के कारण वो नहीं जुड़े, बट हम जरूर उनके पास आएंगे. तो सबसे पहले ललित जी जो हैं काम करते हैं, डायरेक्टर हैं एट सैगल फाउंडेशन, एंड उनका काफी सारा एक्सपीरियंस है ऑन द इशू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो हाउस होल्ड बेस्ड सोल्यूशंस जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए. उनका काफी अनुभव है और सैगल फाउंडेशन है अलग अलग लोकेशंस में काम करती हैं, हरियाणा से लगा के बिहार भी काम करती हैं. और उनका अनुभव आर्सेनिक के इशू पे वो काम करते हैं, और आर्सेनिक के अलावा आयरन के जो कंटामिनेशन है उनके मुद्दे पे भी काम करते हैं. तो इसलिए वी आर गोइंग टू हैव इंटरेस्टिंग सेट ऑफ डिस्कशंस बिटवीन हमारे जो आज पैनलिस्ट हैं. तो सबसे पहले मैं सभी को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. और ललित कुमार जी, ललित शर्मा जी, वेलकम टू दिस आयरन मैटर्स फोरम. और हमारे साथ और जुड़ रहे हैं प्रकाश नायक जी जुड़ रहे हैं जो वाटर फॉर पीपल से हैं,
और प्रकाश जी डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, काफी साल का अनुभव रखते हैं. ही इज कमिंग विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन डेवलपमेंटल इश्यूज. Currently he is working in Water for People, and then where he is handling a coordinating a project where iron contamination is a big focus there, and he comes with a lot of knowledge of working on the issue of iron. और आज हमारे साथ वो अपना जो एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे शेयर करेंगे. सो प्रकाश जी, वेलकम अगेन टू दिस आयरन मैटर्स फोरम डिस्कशन. कुमोद जी यहाँ पे नहीं, आप कुमोद जी जब आएंगे मैं उनको दोबारा इंट्रोड्यूस कर दूंगा. बट यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ललित जी. कुमोद जी अगर आप हैं तो मुझे बताइए. ठीक है. तो ललित जी मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, और कुछ सवाल हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था. तो आप 10 मिनट ले सकते हैं और उन आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि कैसे कम्युनिटी जो है, सबसे पहले कि क्या हम लोगों को आयरन जो पानी पीने के पानी में होता है, should we really be concerned about it? So there are some questions that I have asked the speakers today. Iron and drinking water, should we really be concerned about it? And then कम्युनिटी का क्या परसेप्शन है आयरन को लेके, उसके बारे में ये क्या केवल परसेप्शन है या फिर एक रियलिटी भी है जो कम्युनिटी समझती है. और कुछ फ्रॉम योर लोकेशन एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस हियर, वो भी आप बात कर सकते हैं. और वेरी importantly the final question है, if how do we bring iron into decision making with respect to water supply programs like Jal Jeevan Mission right now, तो उसको कैसे हम सोच सकते हैं. तो ये questions हैं, एक कॉमन क्वेश्चन है हमारे स्पीकर्स के लिए. तो मैं सबसे पहले ललित जी आपसे आप 10 मिनट्स ले सकते हैं, और इसके बाद प्रकाश जी आप इसके बारे में बात कर सकते हैं. थैंक यू किरण. आयरन एज सच अगर देखा जाए तो जैसा पोलदा ने भी मेंशन किया था कि आर्सेनिक के साथ तो होता ही है, बहुत बार ये फ्लोराइड के साथ भी मिलता है. और आयरन एक ऐसी समस्या है पानी की, मोस्ट ऑफ द टाइम द यूजर नो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द वाटर बिकॉज आफ्टर स्टोरिंग इट सम टाइम the water changes its color. पानी कुछ देर रखने के बाद में पीला हो जाता है या कई बार ब्राउनिश हो जाता है. इसके साथ साथ कई बार वो काला भी हो जाता है. और काला जब होता है तो उसमें इसका मतलब ये है कि मैग्नीज भी कहीं पे उसमें अवेलेबल है और उसकी वजह से काला होता है. So now we focus to the iron itself. जैसा कि आप लोगों ने अभी एक ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि अमरूद के पत्ते से इसका पता लगाया जा सकता है. अभी एक और चीज भी मेरे ज्ञान में आई कि जामुन का जो पत्ता है वो भी इसी तरह काम करता है. बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैंने अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए कि कितना वो इफेक्टिव है, पर हाँ वो भी होता है. आम लोग इस चीज को समझते हैं कि उनके पानी में कोई समस्या है कि उसके पानी का रंग कुछ रखने के बाद में पीला हो जाता है. दूसरी समस्या वो लोग इसकी वजह से ये देखते हैं कि वो जो भी खाना बनाते हैं उसका रंग भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहता. जो चावल बनाते हैं वो सफेद नहीं रहता, वो उसमें पीलापन आ जाता है. दाल जो बनाते हैं वो पीली नहीं होती, उसमें ब्राउनिश कलर जाता है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है. साथ ही अगर उस पानी को पीते हैं तो उनको उसमें एक मेटेलिक टेस्ट आता है, कुछ उसकी वजह से उसमें स्मेल भी आती है. तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लोग ऐसा समझते हैं. कई बार लोगों को पता होता है कि ये उसमें अधिक लौह तत्व होने की वजह से ऐसा हो रहा है, और कई बार उनको नहीं मालूम होता है, पर इतना वो समझते हैं कि पानी में कोई ना कोई समस्या है. अब अगर इसका उन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए जिसका लोगों को नहीं मालूम है, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आता है. और खास तौर पर जो लोग शिकायत करते हैं कि हमें गैस बनने की शिकायत बहुत ज्यादा है,
और जब गैस बनने की शिकायत बहुत ज्यादा होती है तो लोग बात करते हैं कि बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो सकता है। लेकिन आयरन की वजह से कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो आयरन फेड हैं और उसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये तो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन नहीं है, फिर भी उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आ रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, खट्टी डगारें आती हैं। तो ये आयरन की वजह से भी ऐसा होता है। और खास तौर पे जैसा पौलदाने में बताया कि लीवर अफेक्टेड होता है इसकी वजह से, तो हमारा जो जिगर है उसको ये आयरन इम्पैक्ट करता है। तो आयरन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक परसेप्शन है, इट्स ए रियलिटी। और कम्युनिटीज काफी हद तक समझते हैं कि पानी में समस्या है। कुछ लोग समझते हैं कि लौह तत्व की वजह से, कुछ लोग समझते हैं कि ये उसकी वजह से नहीं है, मतलब उनको नहीं मालूम है कि ये लौह तत्व ही है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। और हमने इसका ये बिहार के अंदर तो बहुत क्लोज स्टडी की है और हमने देखा कि हमारा जो जल कल्प और माटी कल्प दो फिल्टर्स हैं जो आयरन को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, और उनके प्रयोग के बाद लोगों को जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी दवाएं लेनी पड़ती थी वो टोटली बंद हो गई। और उनका लोगों का कहना है कि अब हमारा खाने का रंग भी नहीं बदलता है, हमारा चावल बिल्कुल सफेद रंग का बनता है, दाल बिल्कुल पीले रंग की बनती है, और साथ ही उनको जो गैस, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स होती थी उनसे बचाव हुआ है। कई विलेजेस में हमने जब इसके ऊपर सर्वे किया तो हमने पाया कि एक हाउस होल्ड में लगभग 800 से 1000 रुपए तक की मेडिसिन जो है वो महीने में खर्च उनका मेडिसिन के ऊपर था, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज। एक फैमिली इतना खर्च कर रही थी। और अब जब से उन्होंने ये माटी कल्प और जल कल्प फिल्टर यूज किए हैं उसकी वजह से आयरन वहां नहीं है, तो अब उनका ये खर्चा बच गया है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो कि फील्ड में रिपोर्ट हुए हैं और उनका हमने एक प्रॉपर एक स्टडी कंडक्ट करके उसको हमने देखा है। साथ ही अब जब हम बात करते हैं कि वाटर सप्लाई सिस्टम में किस तरह से फोकस में लाया जाए, ये योजना बिहार में पहले शुरू हुई थी, हर घर नल का जल। और वहाँ पर जब ये योजना शुरू हुई थी तो उन्होंने डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर एक्विफर के डिफरेंट लेवल से पानी लेने का उन्होंने शुरू किया था। और मैंने बहुत सारी स्कीम्स में ये देखा कि शुरुआत में वो पानी उनको बेहतर मिला, उसमें आयरन कंटेमिनेशन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया कि उसमें आयरन कंटेमिनेशन आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का उसका एक बड़ा कारण है कि जब हम एक्चुअली उन लोगों ने डीपर एक्विफर से पानी निकालने की सिफारिश की थी ताकि उसमें आयरन कंटेमिनेशन से वो बच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम पानी विड्रॉ करते हैं, पंप आउट करते हैं, तो वहां पर एक पानी का लेवल उस एक्विफर में नीचे जाता है। और जब पानी का लेवल नीचे जाता है तो साइड से ऊपर वाला जो पानी होता है वो उसमें मिक्स होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे वो फिर आयरन कंटेमिनेशन डीपर लेवल में भी चला जाता है। तो ये एक हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और इसके लिए देखिए, मैं अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह लगे हैं वो बहुत हद तक इनिशियली तो सफल होते हैं, उनसे
काफी रिमूव होता है जो भी आप कंटामिनेंट एड्रेस करने के लिए वो प्लांट्स को लगाते हैं, लेकिन बाद में एक समस्या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ऐसी आती है कि वो बहुत दिन तक नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि जब हम कम्युनिटी वाटर फिल्टर से ट्रीट करके हम हाउस होल्ड लेवल तक पहुंचते हैं, तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं फिर कंटेमिनेशन एड इन हो जाता है। सो सेकेंडरी कंटेमिनेशन एक इशू रहता है। तो उस सब को देखते हुए मैं तो यही सिफारिश करता हूं कि हमें अपने हाउस होल्ड लेवल पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। और साथ ही लेकिन हमारा जो सरकार का एक मैंडेट है कि हर घर नल का जल या फंक्शनल टैप टू एवरी हाउस होल्ड, उसको प्रमोट करने के लिए इसके ऑपरेशन मेंटेनेंस को भी साथ साथ हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि वो हर घर को एक सेफ वाटर मिल सके। साथ ही हमें जब तक वो नहीं हो पा रहा है, हाउस होल्ड वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। सो किरण, अगर आपको बाद में थोड़ा टाइम सेव हो तो मैं ये जो 2 सॉल्यूशंस हाउस होल्ड वाटर ट्रीटमेंट के मैंने सजेस्ट किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक आई कैन स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच ललित जी। आपने आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया और आपके जो पॉइंट से आपने जो कहा कि लोगों में आयरन का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत रियल है। आप उसको आपने अलग अलग बातों में भी आपने बताया है। और आपको हम वापस आएंगे, टाइम रहेगा वापस आएंगे, ताकि आप अपना और जो आप शेयर करना चाहते हैं उसको हम देखते हैं। मैं आपको हिंट कर दूंगा कि हमारे पास अगर टाइम आउट है। सो विल कम बैक टू यू। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ प्रकाश चंद्र नायक जी। प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ प्रकाश जी, वेलकम टू दिस पैनल डिस्कशन। अभी तो सेम सवाल है कि क्या कम्युनिटी को आयरन का जो मुद्दा है, आयरन का जो इशू है, क्या उनको लगता है कि वो एक बड़ा इशू है? और आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि हमको आयरन का जो इशू है, क्या उसको सिंपल इशू है या फिर ऐसा हम लोग को क्या कंसर्न होना चाहिए? और कोई भी एक स्टोरी जो है, कोई आप हाईलाइट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है आप शेयर करना चाहते हैं आपके काम से जो आपने देखा, तो वो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू किरण। आयरन तो जो पहले ललित जी बोले परसेप्शन नहीं है और रियलिटी है। और इसको बहुत जगह अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मैं 2001 से डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जुड़ा हूँ। पहले आपरो के साथ जुड़ा था, तो वहां से मैं देख रहा हूँ पानी में आयरन को जैसे कुछ नहीं है। कुछ आयरन कंटामिनेशन को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मेरे सामने भी मैंने देखा है, जस्ट ऑरेंज कलर का पानी लोग पी जा रहे हैं, जिसको हम छुएंगे भी नहीं। मैं पहले बताऊंगा मेरा 2003-04 का जो एक एक्सपीरियंस है उड़ीसा में, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारे यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था। यूनिसेफ प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे आयरन रिमूवल प्लांट, मैनुअल आयरन रिमूवल प्लांट लगाए थे। ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू आयरन रिमूव कर रहे थे। उस टाइम पे कंधमाल में वो सक्सेस हुआ था। बट आफ्टर सम डेज मीन्स 3-4 साल के बाद बहुत जगह डिफंक्ट हो गया। उसके कारण इतना मैं स्टडी नहीं किया, उसके कारण क्या हो सकता है क्या नहीं, या कम्युनिटी मेंटेनेंस भी कम हो गया। उसके बाद लोगों ने वो फिल्टर वेल बना के सब दूसरा किए। रिसेंटली एक मैं अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी
बिहार में पोस्टेड हूँ वाटरफॉल पीपुल का, और यहीं से मैं ऑपरेट करता हूँ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल वगैरह जहाँ भी होता है। बिहार का सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ। बिहार का सिचुएशन में बहुत सारे एरिया ऐसे जो एरिया में हम लोग इंटरवेंट कर रहे हैं। एक सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, 5 ब्लॉक है, 52 यूपी है। वो एरिया में, वो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अंदाजन 1600 वाटर पॉइंट के 1600 के आसपास वाटर पॉइंट लगाए तो सिंस 2011। और मैं ज्वाइन किया 2018 में, 2011 से जो चल रहा था काम। 2018 में ज्वाइन करने के बाद एक चांस मिला मुझे देखने के लिए पानी का स्थिति क्या है हर जगह। जो जो हम लोगों ने इंटरवेंट किए हैं वो जगह लोगों को सफिशिएंट पानी मिल रहा है कि नहीं, पानी से लोग खुश है कि नहीं, इस सब के बारे में सुनने को मिला। तो हम लोगों ने, जैसे ललित जी बताए, कुछ हम लोग हमारा दिमाग यूज करके डीपर एक्वीफर से ड्रॉ कर लेते हैं पानी, वो सही वो सब जगह हुआ है। बट ये तो हम लोग का नेचर है। नेचर और मिट्टी के नीचे क्या होता है वो भगवान के सिवा कोई बता नहीं सकता है। मिट्टी जो हमारा जो सॉइल प्रोफाइल है, नेचुरल फिल्ट्रेशन मीडिया है। जब हम डीपर एक्वीफर से पानी बहुत ड्रॉ करते हैं तो ऊपर का एक्वीफर से पानी डेफिनेटली नीचे जाता है। तो नीचे जाता है, आपको पता होगा, ये तो जो भी हम लोग का जो सॉइल प्रोफाइल है वो सेडिमेंट होके बना है। तो उस वजह से ऊपर का एक्वीफर से जब जाता है, 1 साल हो, 1.5 साल हो, 6 महीना हो, 3 महीना हो, वो फिर आयरन का डोमिनेशन बढ़ जाता है। तो इससे मेरे 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 ख्याल में जो आया, तो मैंने क्या किया जा सकता है देखा। जैसे मेरे दिमाग में आया 2003 में हम लोगों ने बाहर लाके इसको ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू किए थे। ऐसा वैसा यहाँ किया जा सकता है कि नहीं। यहाँ एक मैंने फिल्टर डिजाइन किया, उस डिजाइन के थ्रू जो पानी है उसको फिल्ट्रेशन किया गया। जैसे अभी पॉल बता रहे थे, उसी टेक्नोलॉजी, सेम टेक्नोलॉजी अराउंड है, मगर ये छोटा लेवल पे, छोटा कम्युनिटी है, 2500-3000 लोग है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आया, लोगों ने मेंटेन नहीं किया। एक साल के अंदर, एक साल क्या, इवन 8 महीना 9 महीना के अंदर वो डिफरेंट हो गया। हम उसको एक ही जगह इम्प्लीमेंट करके देखे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा और कुछ किया जाए। जैसे अभी ललित जी बोल रहे थे, इंडिविजुअल लेवल में कई जगह सक्सेस हो सकता है, कई जगह सक्सेस भी नहीं हो सकता है। तो फिर कम्युनिटी लेवल में क्या किया जा सकता है, जैसे देखते देखते मैं बहुत सारा लिटरेचर फॉलो किया, ये किया, तो देखा मैंने वो आयरन एक्सचेंज का एक आयरन रिमूवल प्लांट है, दैट इज ऑल्सो मेंटेनेंस फ्री, और वो आयरन रिमूव करता है थ्रू मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो वो हम लोग का जो माने कि कितना क्वांटिटी पर डे कितना क्वांटिटी चाहिए, उसके हिसाब से उन लोगों को बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया। तो उन्होंने देखा 2000 LPH का फिल्टर लगा सकते हैं वहाँ। तो उस फिल्टर को वहाँ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद वो जगह अराउंड अभी तक ठीक चल रहा है। हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे 2019 में। अभी रिसेंटली मैं खबर लिया था 10-15 दिन पहले, जब हम लोगों ने बात किया था अगले महीने आयरन कंटामिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसी टाइम पे मैं फोन करके बात किया था लोगों से। लोगों ने बोला आयरन कंटामिनेशन उसमें अभी तक हम लोगों ने देखे नहीं।
आयरन में क्या होता है, आयरन लोग उसको ऐसे बाईपास कर देते हैं। आयरन में रियली स्टमक प्रॉब्लम निकलता है, रियली आपका जो कपड़ा वगैरह साफ करते हैं उसमें स्ट्रेंथ आता है, रसोई में आता है बोल के मैंने सुना है, मगर मुझे उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि रसोई वगैरह मैं तो करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं जानता नहीं हूँ। इसके बाद हम लोगों ने 3-4 जगह, 5 जगह हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, 5 ब्लॉक में 5 जगह जो मेजर कंटामिनेशन एरिया है, जहाँ आयरन कंटामिनेशन 1.2 टू इवन 2.4 तक आता था, वहाँ हम 5 जगह इम्प्लीमेंट किए। उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हम छोड़ दिए थे, अच्छा पानी आ रहा था, लोग भी खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन हम लोगों का एक टेक्निकल ऑडिट आया, टेक्निकल ऑडिट में मैं गया था वहाँ, तो वो एरिया भी हम लोगों को विजिट करना पड़ा। तो वो एरिया में विजिट करके हम जस्ट लौट रहे थे, पीछे से कोई बोला, सर हमारा डाइवल खाना बंद कर दिए, कम कर दिए, बंद कर दिए शायद बोला, या कम कर दिए। मैं समझ नहीं पाया तुरंत, फिर घूम के उसकी तरफ जब देखा, वो एरिया का एक लोग मुझे बोल रहा है डाइवल मीन्स डाइवल ये एंटासिड, और उनके हिसाब से, गांव का हिसाब से हर एंटासिड डाइवल ही नाम है उसका। जैसे हम लोग हर वॉशिंग पाउडर को सर्फ बोलते हैं ना, वैसे वो हर एंटासिड को डाइवल बोलते हैं। तो मैं बोला क्या हुआ भाई ना, आपका पानी का ट्रीटमेंट के वजह से हम लोग का डाइवल खाना अराउंड बंद हो गया। मुझे रियली बहुत खुश लगा। इससे पहले जब उन लोगों का ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था, वो लोग बहुत, मैं भी उनके साथ था 2018 में, बहुत इधर उधर पूछ रहे थे, बहुत बार वो पीएचडी का जो डिस्ट्रिक्ट लैब होता है वहाँ टेस्ट करते थे, ये करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था उनको। तो उनको शायद एक डॉक्टर ने बताया कि डाइवर आपका जो पानी में प्रॉब्लम है उसके वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइन डिजीज सब निकलता है, पानी को आप ये कीजिए, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट करके पीजिए, ये ठीक हो जाएगा। इसमें हम लोग जानबूझकर के वेलअप एरिया में लगाए हैं, और जानबूझकर 4 माने पुअर एरिया में लगाए हैं। वेलअप एरिया में क्या हो रहा था, पहले ये लोग दिल्ली वो जो 20 की लीटर वाला बोतल मिलता है ना, ट्रीटेड वाटर, वो 1 से 2 बोतल खरीदते थे, प्लस महीने में करीब 200-300 से लेके 1000-1500, तो उनके वो तो कोई लिख के रखा नहीं है, ऐसे खर्चा होता था डॉक्टर के पास। अभी वो उसी दिन वो आदमी बताया, हम लोगों का तो 60 रुपया पर डे जो खर्चा होता था मैंने 2 बोतल पानी का, वो बंद हो गया, प्लस जो हॉस्पिटल में जाके हम लोग डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेते थे, वो भी बंद हो गया। आयरन कंटामिनेशन ऐसा नहीं है कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, आयरन कंटामिनेशन बहुत प्रॉब्लम करता है। रिसेंटली आई हैव बीन टू महाराष्ट्र में मैं 1 महीने में मेरा एक गले में इतना निकला, वो आयरन कंटामिनेटेड एरिया था, वो जो मोशा होता है, मोल्स, इतना निकला। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए डर के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला आपका एरिया, आप शायद ट्रीटेड वाटर पी रहे थे, ये जो यहाँ जो ट्रीटेड वाटर मिल रहा है यहाँ में शायद आयरन कंटामिनेशन है। मैं एक्चुअली वहाँ एक गलती किया है, वो महाराष्ट्र का मेलघाट टाइगर सेंचुरी एरिया में, ट्राइबल एरिया में जब घूम रहा था, प्यास बहुत लगता था, जहाँ पानी जो मिलता था पी लेता था। अब मुझे पता है उसमें आयरन कंटामिनेशन है, थोड़ा बहुत स्मेल होता है जो आयरन कंटामिनेशन में होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इससे तो कम से कम वो डॉक्टर ने बोला ये उसी के वजह से है, जितना निकला है 5-6 टन निकल गया, तो उसी के वजह से आयरन कंटामिनेशन है। हेल्थ माने हेल्थ में प्रॉब्लम लाता है। आयरन कंटामिनेशन छोटा कंटामिनेशन सोच के उसको छोड़ने से होगा नहीं, ये आयरन कंटामिनेशन ऐसा नहीं है मार देगा लोगों को,
और मगर वन टाइप ऑफ स्लो पॉइजन. थैंक यू किरण. Thank you, Prakash ji. I think very interesting story आपने narrate किया. For all people who could not follow what Prakash ji said in Hindi, I will just like to just narrate that one incident that Prakash ji talked about, that when he was on the site visit and where through his team they had installed iron removal plant, and during the field visit some villages had talked to him about how after the iron removal plant had been implemented, how divol khana kam ho gaya. That's the antacid that people use there generally to avoid digestion related, gastrointestinal related issues आता है. So eating of those tablets or using antacid became quite less after the this plant was implemented. So I think one of those stories that Prakash ji mentioned here. So I thought it will be good if that is also translated to English, so that everybody understands that what Prakash ji talked today about, that iron is not a issue, it's not a perception, it's a reality, and it has major effects on health, and it also has effects on how families spend money on health. So that also has been explained by Prakash ji. So thank you so much Prakash ji. आपने अपना टाइम निकाला और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया. और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आपके लिए तो आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Okay, so with this, I would now move on to our next section, which is now we'll now going to release the safe water learning cards. Sorry, not safe water learning cards. Sorry, we are going to release the quiz for iron matters, and then I'm going to quickly go ahead and share you the link. Just give me a moment. So this, like every month, we are having this quiz for specifically focused on that contaminant. So this time, the quiz is on iron matters. I request everybody to participate in this quiz challenge. हेमचंद, वो नहीं आ रहा है chat box. Yeah. So Abhi, I have gone ahead and shared you the link for the quiz. Kindly. मतलब वो आएगा ना question. Okay. I have gone ahead and shared you the link of the quiz. Kindly fill up. It's not going to take much time. There are simple questions, and those who get full scores, we are going to recognize them as champions for this particular month. I hope आप लोगों को क्विज का ये मिल गया होगा. अगर छोटा सा क्विज है और आप जब इस क्विज को कंप्लीट करेंगे तो मैं क्विकली जो हमारा स्क्रीन है उसको शेयर कर देता हूं ताकि हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों ने इसको कंप्लीट किया है. It will take you not more than 3 to 4 minutes. आपको 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा उस क्विज को कंप्लीट करने के लिए. मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. यस, तो क्विज शेयर कर दिया, मैंने शेयर कर दिया है. एंड वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस. Okay, we have already got the first response. Whoever is completed, kindly type yes in the chat box. अगर आपने complete कर दिया है, they've got 7 score. The first person has got 7 score. ये जो quiz है 10 marks का एक quiz है, तो आप अगर पूरा सवाल सभी 6 questions हैं. Okay, we have the first quiz from first response from. We are now getting Prakash ji has also responded. Fantastic.
and let's wait for some time and also see if कितने लोग respond करते हैं. Three responses as of now. तो मैं लिंक को दोबारा शेयर करता हूँ. ये एक क्वेश्चन था मेरा, ये क्या 2015 में 1 मिलीग्राम पर लीटर हुआ है? हाँ हाँ, वो ड्राफ्ट में हुआ था. हाँ रिसेंट रिवीजन हो गया है उसका. हाँ ड्राफ्ट में अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं. रिसेंट का जो रिसेंटली हम लोगों ने लिया था, रिसेंट वर्जन मीन्स हम लोगों ने खरीदा था 2021 जून में अराउंड. BIS से आयरन ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड का हैंडबुक लिया था, उसमें तो 0.3 है अभी तक. ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ उसका जो रिसेंट वर्जन है, मैं शेयर कर देता हूँ. ओके. 11 responses आ चुके हैं. Anyone for अभी तक full scores अभी तक नहीं आया है? Is the quiz tough? Quiz के जो questions हैं क्या tough हैं? Let us know in the chat box. ओके, धीरे धीरे 18, 19. ओके, यस आई सी कमेंट्स आ रहे हैं. कुछ क्विज क्वेश्चन थोड़ा टफ था. ओके, एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसमें, तो उसके बारे में जब हम लोग ये कर सकते हैं, पीपल हु गॉट लेट्स सी बेस्ड ऑन हाईएस्ट स्कोर्स भी हम लोग पब्लिश कर सकते हैं. सुंदर सर, if people are not getting 10 out of 10, so people who have scored the highest scores can also be just as the champions for this month. Yes, sure, Kiran. And yes, thank you Neha Sao for completing. If you have completed the quiz, kindly type done in the chat box. Let us know that if you have completed. More than 70 people here in this call. I see one person is two people have got 8, score of 8. We'll wait for about 35 responses, and then we will want to go back to hear from Birija Satapathy here. हम लोग थोड़ा उनके से भी सुनते हैं आयरन के इशू के बारे में, वो क्या अपना राय रखना चाहती हैं. तो 35 responses का वेट करेंगे, and then we'll come back to this quiz again. Sharing the link of the quiz again in the chat box. All right, अभी तक 8 is the highest score. Eight is the highest score as of now. All right, I will pause right now and we'll come back to this quiz again. Here I would like to take this opportunity to welcome Birija Satapathy. Are you around? Yeah. Okay. Hi. So welcome to this water quality matters interaction forum. और आपने भी बहुत सारा सपोर्ट दिया है इस पर्टिकुलर वाटर क्वालिटी मैटर्स के
इवेंट को थिंकिंग में और इसको आगे लाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. सो योर थॉट्स ऑन दिस इवेंट, वन दिस वाटर क्वालिटी मैटर्स एंड आल्सो आयरन मैटर्स के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? Thank you, Kiran. Thank you, INREM Foundation, Sundar and team. This is a wonderful initiative on water quality matters. So we are discussing every month on a particular topic, which is very relevant. When you go to field, you realize the importance of discussion. Because every day this is just a matter for us, but every day people are facing that problem. Recently, I had been to Raigad and Korba, two of the districts of Chhattisgarh, where we visited because we meet many people and also visit talk to different stakeholders. So I visited a school there where this was mostly on the Swachh Bharat Puraskars, just to understand what is the issue there. And it involves every parameters. Around 59 parameters are there in Swachh Bharat Puraskar thing. So schools are ranked based on these parameters, 59 parameters. So one of the sub component is water. If any of you knows, it is very popular now because it's 2022. SBP has been launched and it's in the process of for finalization of schools, which will be awarded. So that was a school where they have very good infrastructure, like hand washing stations, toilets everywhere, and also filter purification for the drinking water filter. So I saw everywhere there is red patches. So this is from there I could understand there is more iron content in the water. So I asked them, have you ever tasted this water? So one of the SBP indicator was that school needs to have water tasting, and the report should be with the school. So that is that was a advocacy actually, just to keep that particular indicator, so that the schools will be not just so that it is tasted, rather they will keep that report and understand what is there in the report. So and I got to know that school had 3.5 ppm in the content of the iron. So they have tested in the laboratory, and they are concerned about the high iron content in the water. So they have opted for another source and are taking water for the drinking purpose. So this is just an example how how people face the problem, and they were worried what they will do. They have already started initiated discussion on with the PhD. So one thing, the beauty of this course is we always listen to the experts in one point, and in the second portion of this discussion, we always see how people have done some work at community level, and that this is the beauty of the this webinars that we have gone through. This is the fourth one. So there's nothing like it is not, water quality is not restricted to only laboratory. It is also there. The knowledge should go to the field, and the field the problem issues can also be adapted at advocacy level to do something good for the community. So I would like to speak one more point. When we are talking of the there's a very good interesting demonstration you have shown for the iron testing, which is through the guava leaves. That can be, and even iron, we always say it's not invisible because it is visible in the lal pani bhi bola jata hai. In Dantewada, many states, if you know, it's almost 25 states are contaminated with iron. So in Dantewada, they say it's lal pani because that of the color. So when we are talking of water quality testing, it can be just to let others know. Every district, the water quality monitoring framework, which was developed recently in 2020-21, every district laboratory and state laboratory, the mandatory parameters iron is there.
So for any district laboratory in your particular, wherever you are from in India, so you can taste your water in your district laboratory. In that framework, so its indicative rates has been given for every testing. For iron testing, personal water, if you have personal, so it is 50 rupees per in that iron indicators. And also as a package also you can taste your water, minimum parameters. And down the line, when you are talking about the subdivisional lab and the block level laboratory, it has also component like if it is area specific. If your particular seat block or subdivision where you have iron contamination, you can make it a mandatory. So this is how framework speaks, and it's very interesting to listen to all of you. Thank you so much to all of you, INREM, for inviting and sharing. I learned a lot of this discussion, because as a manager we are not even that quiz I deliberately attempt, because I had to understand how much I know, because we know a particular component of it. We don't know many packages, and I know you are putting many, Kiran, you are putting many difficult questions, those names and all. So even I felt many times. Thank you so much. Thanks, Sundar. Thanks, Kiran. Over to you. Thank you, Raja. I think one attempt that I am trying to have with the quiz is that to also identify people who are behind so much invention. I think one question on TerraFill. Now, TerraFill is now used across many Indian states, but I had a hard time to actually find that particular question. But I was glad that I got that question, and because the contribution on working on water quality issues, or be it wash or the water sector, that is something that I wanted to highlight through this quizzes as well. And then people also are very important. They are doing fantastic work. Like today, I would like to thank Paulda for sharing his experiences. And then we also had speakers from Sehgal Foundation, Lalit Sharma ji, and from Water for People, Prakash ji, who came here and shared their knowledge about the issue of iron and how iron is not something that can be neglected. वो उसको हमको फोकस में रहना चाहिए. इट्स नॉट कोई परसेप्शन नहीं है, एक रियलिटी है, प्रॉब्लम है. तो आज हम लोगों ने इसके बारे में बात की. सो एंड देन आई वुड लाइक टू थैंक यूनिसेफ, नानक जी, बिराजी जी, एंड फॉर supporting us in this particular journey. And thank you all our participants today who have come here and made this event successful. और भी अगर सवाल हैं तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहेंगे. But I would like to formally conclude the event now. But उसके पहले यहाँ पे क्विज के जो रिजल्ट्स हैं और यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ. People. हेलो. Yes. हेलो. हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर. रश्मि श्री बोल रही थी कोरापुट से. हाँ बोलिए. सर जो क्विज का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसका कोई करेक्ट आंसर नहीं लिख रहा है, बोल रहे हैं कोई करेक्ट आंसर नहीं है उसका. 3 में से कोई एक भी करेक्ट नहीं है. मैं मेरी स्कोर देख रही थी, उससे लिखा था कोई नो करेक्ट आंसर. मैं 3 को टच किया था, लेकिन लिख रहा है कि कोई नहीं, मैंने नो करेक्ट आंसर. अच्छा, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 सर. हाँ सर, देख लेता हूँ. हाँ, मैं देख लेता हूँ. थैंक यू सो मच ये रिप्लाई करने, इसको हमको बताने के लिए. थैंक यू सो मच. मैं इसको देख लेता हूँ एक बार. और यहाँ पे मैं, हाँ, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज पीपल. लिस्ट मैंने यहाँ पे शेयर किया है जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है. निपेंद्र कुमार शर्मा, राजू जॉर्ज, कुंतल, रूबी शुक्ला, नीतू बख्शी, सतीश कुमार साहू, तेंगेंद्रा, एंड अगेन सतीश कुमार. So congratulations सभी को. All of you are water quality champions for this particular month, and आप लोगों ने highest score किया है इस quiz में. तो we would like to acknowledge your effort, and we would like to thank you all for coming up. So thank you everyone, and we would like to conclude the talk today. But अगर कोई सवाल है आपको पूछना है तो आप please रह सकते हैं. We'll be there for another 5 to 10 minutes. Thank you.